Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have done the importance of planning, that why planning is important. Now in this class, our next topic is limitations of planning. What are the limitations of planning? Limitations meaning what are the drawbacks of planning? What are the demerits of planning? Okay. Now the first drawback or first limitation of planning is that planning involves huge cost. बहुत खर्चा हो जाता है organization का in order to do planning. Now students, we all know that planning is based on future forecasting. Future forecast करना पड़ता है. And students, planning is also based on past information available. जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट इंफॉर्मेशन है, पास्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके बेसिस पे भी प्लानिंग करी जाती है. जो पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पास्ट नंबर्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, इनके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं. राइट? तो क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा फ्रीली अवेलेबल होते हैं? नो. एट टाइम्स वी हैव टू पे सम कॉस्ट इन ऑर्डर टू गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट नंबर्स. राइट? तो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने के लिए भी हमें एट टाइम्स वी हैव टू पे ह्यूज कॉस्ट. अनदर थिंग इज, क्या प्लानिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही करते हैं? नो. एट टाइम्स फॉर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो एमएनसीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, व्हाट दे डू इज दैट दे हायर प्रोफेशनल्स, दे हायर एक्सपर्ट्स. जो प्लानिंग में एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें हायर करते हैं फॉर प्लानिंग प्रोसेस. राइट? So obviously, if you hire an expert for it, they'll charge some fees, right? तो उन्हें fees भी payment करनी पड़ती है. So therefore we say that planning involves huge cost because you have to pay the experts also, professionals also, and you have to pay for the past information available, right? So the first limitation क्या हो गई? कि planning involves huge cost. Here I write, I'm writing experts, so that you will remember the 2 points. Okay. Next is, planning is a time-consuming process. Yes, it's a time-consuming process. It takes huge time to make a plan. आप किसी भी बर्थडे पार्टी करनी है, कोई घर में इवेंट करना है, या कहीं ट्रिप में जाना है, या स्कूल में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है. राइट? इट टेक्स एटलीस्ट 2 days. बहुत छोटा सा फंक्शन है घर में, उसको भी प्रॉपर प्लान करने के लिए भी यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 3 days. राइट? सो इमेजिन, एक कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है? ओवरनाइट आप प्लानिंग नहीं कर सकते, बस रातों रात सोच के ऐसे करना. नो. अगर सक्सेसफुल एक्यूरेट प्लानिंग चाहिए, एक्यूरेट प्लानिंग बनानी है, सो इट रिक्वायर्स टाइम. देयरफॉर वी से दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आई होप स्टूडेंट्स these 2 points are clear. Now coming to the third one. Students, the third point is planning leads to rigidity. Rigidity means which cannot change. ठीक है? जो चेंज नहीं हो सकता है वो क्या होता है? रिजिडिटी. नाउ स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर कि प्लानिंग को बनाने में, प्लानिंग करने में बहुत कॉस्ट लग जाती है, बहुत टाइम का खर्चा होता है. सो द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव दिस टेंडेंसी, उन्हें क्या लगता है कि जब प्लानिंग में इतना टाइम हम खर्चा कर चुके हैं, इतना कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है, तो वी विल स्टिक टू दैट सेम प्लान.
We will not change the plan. We will stick to that same plan that we have made. क्यों? इतना cost लग गया है और इतना time लग गया है. Then why to change the plan? We will stick to that same plan. So planning leads to rigidity. क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को लगने लगता है कि नहीं, अब इतना खर्चा नहीं करना, इतना कॉस्ट नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना. So whatever plan we have made earlier, we will stick to that plan. But do you think that this is feasible? ऐसा करना चाहिए? No, this is not desirable. We should not stick to the same plan. Why? Because business environment keeps on changing. तो आपको भी अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? तो मैनेजर्स क्या करते हैं? दे जस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट सेम प्लान. जैसा बना हुआ है प्लान, दे जस्ट फॉलो इट. व्हाई? बिकॉज कॉस्ट बहुत लग चुकी है और टाइम बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, राइट? देयरफॉर मैनेजर्स क्या करते हैं? रिजिड हो जाते हैं. Therefore, we say that planning leads to rigidity. Okay, so what is the reason behind it? I am writing here. Because of cost and time. इसकी वजह से क्या होता है? Managers try to stick to the same plan. Fourth point. These 2 points are actually linked together. These 4 points are linked together. Planning reduces creativity. At times, planning creativity reduce कर देती है. आप नया नहीं सोच पाते, इनोवेटिव नहीं सोच पाते, कुछ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाते. क्यों? Because as I had told you in the third point, कि मैनेजर्स की क्या टेंडेंसी हो जाती है? That they just want to stick to the same plan they have made earlier. जो पहले प्लान बना हुआ है उस पे ही टिके रहना चाहते हैं. क्यों? Because huge amount of cost has been incurred and time has been wasted, right? So they just want to stick to that same plan. उसकी वजह से क्या होता है? कुछ नया नहीं हो पाता. अगर आप आइडियाज दोगे भी अपने मैनेजर्स को, they will not agree to those ideas. Why? Same reason. Okay, so it reduces creativity. So students, these 4 points are actually linked together. We'll just revise these 4 points. That planning में क्या होता है? अगर आप प्लान बनाते हो, प्लानिंग करते हो, तो बहुत खर्चा हो जाता है. क्यों खर्चा हो जाता है? Because in planning, while doing planning, you need past information, you need past facts and figures, and sometimes these facts and figures are not available free of cost. You have to pay money for it. And secondly, at times you have to hire professionals who do planning for you. So obviously you have to pay them some fees. Okay. It is a time consuming process. थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है, but it is a time taking process. Planning leads to rigidity क्योंकि इतना कॉस्ट लग गया है, टाइम लग गया है. तो मैनेजर की क्या टेंडेंसी बन जाती है कि नो, वी विल बी स्टिकिंग टू दैट सेम प्लान, राइट? सो इट लीड्स टू रिजिडिटी. तो क्या ये चीज सही है? नहीं है, राइट? बिकॉज एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड यू नीड टू चेंज योर प्लान. अगर चेंज नहीं करोगे सो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, सेम रीजन. तो कोई भी नए आइडियाज जनरेट नहीं हो पाते हैं. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन. Planning may not work in dynamic environment. Planning may not work in dynamic environment. Dynamic is what? Changing. अगर environment बहुत जल्दी change होता जाएगा तो क्या आपकी planning work करेगी? नहीं work करेगी. You will always need some another plan. Why? Because environment has changed, right? And if you will not make another plan, then क्या होगा? You will lag behind. आप कभी भी successful नहीं हो पाओगे.
So according to the changing environment you have to change your plan. तो अगर आपका ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, राइट, सो इन दैट केस द प्लानिंग may not work. Okay. Students, our last point is that planning does not give guarantee success. ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली तो आपको सक्सेस मिल ही जाए, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल ही बनी हो. Now what are the reasons behind it? The first reason is implementers. I am writing it here, implementers. Now who are implementers? Implementers are the ones who will be actually implementing your plan. Planning तो आपने बहुत सक्सेसफुल बना ली, प्लानिंग करने वालों ने तो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई, बट प्लानिंग सक्सेसफुल रहती है या नहीं रहती है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है इम्प्लीमेंटर्स पे, जो एक्चुअली उस प्लान को फॉलो करेंगे, हु विल बी एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्लान. If they will follow the plan properly, then yes, you can get success. But if there are lot of loopholes meaning बहुत कमियां रह जाती हैं, they do not properly follow the plan, then there are chances that you may not get the success, right? So first reason तो ये हो गया. अब स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि प्लान तो बन गया बट इतना सक्सेसफुल नहीं बना. नाउ व्हाट कैन बी द रीज़न? द फर्स्ट रीज़न हियर इज forecasting. Now as we have discussed many times that planning is based on forecasting. You have to forecast the future, you have to take a peep into the future. आपको फ्यूचर में झांक के देखना पड़ता है, एंड उसी के बेसिस पे यू मेक अ प्लान, राइट. नाउ सपोज यू आर नॉट एक्यूरेट इन फोरकास्टिंग, आप फोरकास्टिंग में एक्यूरेट नहीं हो, तो क्या आपका प्लान इतना अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट. तो आप जितना अच्छा फोरकास्टिंग कर पाओगे, जितना एक्यूरेट कर पाओगे, सी 100% एक्यूरेट फोरकास्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट, टू लार्जर एक्सटेंट अगर वो प्रॉपर फोरकास्टिंग कर पा रहे हो तो क्या होगा? आपका प्लान भी सक्सेसफुल बन पाएगा. बट इफ़ यू आर नॉट एक्यूरेट, जस्ट 50% आपकी फोरकास्टिंग सही रही या जस्ट 60% सही रही, तो चांसेस क्या हैं? वो जो 40% हैं उतना आपका अनसक्सेसफुल होने का चांस है, राइट. सो यू हैव टू बी proper in forecasting. Now third is facts and figures, or you can say the past information available. Now as we have discussed in the first point कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी चाहिए होते हैं, इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, जो पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो चाहिए होती हैं प्लानिंग करने के लिए, राइट. नाउ सपोज द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच यू गॉट, द इंफॉर्मेशन यू गॉट, जो नंबर्स आपको मिले थे वो एक्यूरेट नहीं थे, राइट. तो क्या आपकी प्लानिंग इतनी सक्सेसफुल रहेगी अगर वो एक्यूरेट नहीं थे? नहीं रहेगी, राइट. Therefore, for proper planning, you require accurate facts and figures also. You require accurate information also. अगर वो जितना accurate रहेगा, जितना accurate numbers और information मिलेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी planning होगी. And therefore, we say that planning does not give guarantee success. Why? Because it depends upon the implementers. Plan तो बहुत अच्छा बन गया पर execute करने वालों पे dependent है. सेकेंड इज़ कि प्लानिंग अभी कब सक्सेसफुल बनेगी? जब आपका फोरकास्टिंग प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा, राइट. एंड इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो. जो भी आपको पास्ट इन्फॉर्मेशन मिली है वो जितनी अच्छी एक्यूरेट होगी उतना ही सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. ओके,
Now I hope students you must have understood all these points. We'll just revise in short. The first is that planning involves huge cost. बहुत कॉस्ट लगती है, क्यों? क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है जो हमारे लिए प्लानिंग करते हैं. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, you have to pay for the past information available, because on the basis of those past information we make plan for the future. Second is that it is a time consuming process. This we have discussed कि बहुत time लगता है, right? Third is it leads to rigidity. Why it leads to rigidity? क्योंकि इतना खर्चा हो चुका है, इतना टाइम लग चुका है. Therefore managers क्या करते हैं? They get this tendency कि नहीं, अब जैसा प्लान है हम उसी को फॉलो करेंगे. एंड क्योंकि रिजिड हो जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो कोई भी नया प्लान वो जनरेट नहीं करते, इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लाते हैं. एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट इतनी जल्दी चेंज होता रहेगा तो क्या जो आपने प्लान बनाया है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाओगे? वो क्या प्लान सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा आपको वैसे ही अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा. एंड लास्ट इज द प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स. By this we have finished our fourth chapter, planning. Now the last topic which is left is types of plans. Right, standing plan, single use plan, and there are various other plans like objectives and others. This is actually deleted this time. For this year that part is deleted. That means इस topic के बाद आपका ये chapter finish हो गया. Right? Please watch all the videos and attempt all the case studies. Thank you.